friends, how are you all? I hope you all are doing very well. So my name is Sindhya Yadav. I am your computer digital mentor. So from today onwards, we are going to start your computer book, chapter number 1, Get Familiar with a Computer. So I hope you all are very excited to start this new chapter. Okay. Now let's understand learning in this chapter. So places where computer are used, types of computer and advantage of a computer, how does a computer work? So we are going to explore all of these concepts in this chapter. So now without any further ado, let's get started. So hello children, I'm a laptop and we know that a computer is a very useful machine, okay, which we have already explored in our previous classes. So here we will learn about the uses of a computer, types and features of a computer, and how a computer works. So these all are the aspects which we are going to explore in this chapter. कि यहाँ पे अभी हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज होते हैं, अबाउट द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर, टाइप्स को समझेंगे, फीचर्स को समझेंगे एंड ऑल्सो हम कंप्यूटर की वर्किंग को समझेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. ओके, सो हियर यू कैन सी द पिक्चर एंड यू कैन हैव एन आइडिया व्हाट दिस पिक्चर इज ट्राइंग टू डिपिक्ट यू. ओके, सो हियर आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसमें यूज हो रहा है, केमिस्ट्री लैब में, लेबोरेटरी में यूज हो रहा है आपका कंप्यूटर सिस्टम, एंड रेस्टोरेंट में यूज हो रहा है, ऑफिस में यूज हो रहा है, एंड स्कूल में यूज हो रहा है, एंड कहाँ पे, हॉस्पिटल. सो दीज आर सम प्लेसेस वेयर कंप्यूटर गेटिंग यूज्ड. ओके, एंड इन टुडेज टाइम ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर आर यूजिंग computer. Okay, so computer is an amazing machine, isn't it? So now let's explore it. Computer is an amazing machine. It can do different types of work. You can play games, write letters, draw pictures, listen to music, check spellings, store information and do calculation, etc. on it. So now let's see the places where computers are used. So computers are used at different places and fields to do different tasks. And they are used in almost every sphere of life. As I told you कि आज के टाइम में कंप्यूटर हर जगह ही यूज हो रहा है. So let's see the very first example or place where computer is getting used is your home. Okay, so computer are used at home to take help in doing homework, listen to music, watch movies, play games, search information, book tickets, pay bills, draw pictures and type letters and assignments. So don't think you need a computer system so you can say that we have a computer. आप ऐसा नहीं सोचो, आपके पास स्मार्टफोन है, that means you are having a computer. क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि स्मार्टफोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वेयर यू कैन play game, watch movies, listen music and also search information, pay the utility bills, right? So now let's see the another example. Another place where computer is getting used is your school. Okay, in a computer lab you must have seen the computer systems. The use of computer has made learning easy and interesting for students. Computers are used at schools to study, to prepare report card, test papers, timetables, typing circulars, and maintaining fee records of students, etc. Now let's see the offices. Computers are used at offices to send and receive messages, to type and print letters and store data. So स्कूल में तो आपको पता ही आइडिया लग गया होगा कि कंप्यूटर क्यों यूज हो रहे हैं. स्कूल में लर्निंग को इजी बनाने के लिए, स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं. It's not only for students, also for the teachers and principals. यहाँ पे आपके सर्कुलर्स को बनाने में आसानी होती है, फी रिकॉर्ड को मेंटेन करने में इजी हो जाता है, एंड टाइम टेबल एंड टेस्ट पेपर में भी आसानी हो जाती है. एज वेल एज ऑफिस एरिया की बात करें तो ऑफिस एरिया में भी कंप्यूटर काफी ज्यादा यूज होते हैं. क्यों? मैसेजेस को रिसीव एंड सेंड करने के लिए, लेटर्स और डेटा को स्टोर करने के लिए. नाउ लेट्स सी शॉप्स एंड शॉपिंग मॉल्स. So computers are used at shops and shopping malls for storing list of items, to prepare and print bills. अब बच्चों जब आप शॉप्स पे शॉपिंग करने जाते हो तो आपने नोट किया होगा कि आपको जो पर्टिकुलर सामने वाला पर्सन है जो आपको सामान दे रहा है वो आपको एक बिल भी देता है उसके साथ. सो वहां पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है उस बिल को जनरेट करने के लिए. ओके, नाउ लेट्स सी बैंक. सो बैंक में भी कंप्यूटर आज बहुत मैंडेटरी हो गया है बच्चों. कंप्यूटर आर यूज्ड एट बैंक्स टू क्रिएट एंड मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ कस्टमर.
कंप्यूटर आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द एटीएम्स वी यूज टू विड्रॉ मनी। अब बच्चों देखिए, आपने एटीएम मशीन देखी होगी। एटीएम मशीन कैसे आपको पैसे निकाल के दे देती है? बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ मशीन, कंप्यूटर इज present inside that machine which is processing each and everything is happening on that machine. Okay, so here computer is also getting used at the banks. Why? Because to maintain and create the accounts of the customer. Now let's see hospitals. So hospital में भी बच्चों यही कारण है, computer are used at hospitals while doing operations to examine patients and prepare medical reports, to test eyesight, etc. Various medical test and preparation of reports is done using computers. So बच्चों हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर्स जो यूज हो रही हैं, ऑपरेशंस करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, साथ ही बच्चों आई साइट को चेक करने के लिए भी चेक होते हैं, और मेडिकल्स की जो रिपोर्ट पेपर में प्रिंट होती है वो भी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर होती है। साथ ही बच्चों यहाँ पे काफी मेडिकल टेस्ट जो होते हैं, आपने आजकल देखा होगा, आप चाहे आपने देखा होगा काफी सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे एमआरआई हो गया, ठीक है, एक्सरे हो गया, ये भी क्या कैसे हो रहा है? कंप्यूटर का यूज करके ही। और इवन दो आजकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो मशीन ही परफॉर्म कर देती हैं, रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स क्या कर देते हैं? ऑपरेशन को परफॉर्म कर देते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। So how is it happening? With the help of the evolving technology. Now let's see restaurants and hotels. So computers are used at restaurants and hotels to maintain records of items and details of customers. So restaurant and hotels में भी बच्चों records को maintain करने के लिए आपका computer system इस्तेमाल होता है। Now railway station and airports, तो जैसे आपको idea already होगा कि railway station और airports पर हम computer का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। So let's see here. Computer are used for reservation and cancellation of tickets. They are also used to manage arrival and departure of trains. After that, and flies track location of trains or aeroplanes and number of seats available in a train or an aeroplane. So basically the crux of दिस पैराग्राफ इज दैट कि जो कंप्यूटर है, रिजर्वेशन और कैंसिलेशन करनी पड़ती है हमें कहीं पर ट्रेवल करने से पहले, राइट? सो वो किसकी हेल्प से होता है? कंप्यूटर की हेल्प से होता है। वेयर? at railway and airport. Okay, so now it also gives us the data how many number of seats are available in a train or an aeroplane. Now let's see designing. So designing में भी आपका जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है बच्चों, कैसे? So let's see here. So computers are used in designing buildings, house, cars, aeroplanes and other machines. They are also used in designing dresses and jewelry. So students, you must have noticed that कि जो आपकी कार है, ड्रेसेस हैं, उनमें कुछ ना कुछ पैटर्न है, कोई ना कोई तरीके से उसे तैयार किया गया है. So how is it happening? Before creating those things, you have to design them. Okay? So वो डिजाइनिंग किसके हेल्प से हो रही है? वो हो रही है आपके कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से. Now next is your scientific research. So computers are used in doing scientific research and forecasting weather, in launching and controlling satellites, rockets and missiles. So here you can see बच्चों, जो भी हमारे forecasting weather means जो weather की हमें पहले से ही क्या मिल जाती है, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कल का वेदर कैसा होगा, बारिश कब होगी, एंड ऐसे ही आपको सैटेलाइट्स, आपने वर्ड सुना होगा जो कि आपके कहाँ पे जाती है, स्पेस में जाती है. तो ये सारी हेल्प, जो सारी चीजें परफॉर्म हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है? कंप्यूटर की हेल्प से हो रही है. रॉकेट एंड मिसाइल को भी इसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है इन द स्पेस. I hope is it clear? Now let's see which quiz mania, which one of the following is not possible for the computer to do. Calculation, is it possible? Cooking, obviously not possible. Computer can't cook. So printing, yes, it can be done by typing, also can be done by computer. Calculation can be done by computer, but cooking is, as of now, robots can cook, but computer system, while sitting at a particular desk, it can't cook your food. Okay, so just cross out. Now let's see the type of computers. So computer are of different type and sizes. Okay, so desktop computer, it is kept on a desk or a table that cannot be easily carried from one place to another. It works on electricity. It is the most commonly used computer. A desktop is a machine with 4 main parts, which we have already covered in the previous classes. So monitor, keyboard, mouse and CPU are the main parts of the computer, right? और ये कहाँ रखा जाता है? डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर रखा जाता है. एंड इट इज वेरी हजार्डस टास्क
you can say complex task to place it from one place to another, right? Now let's see the laptop computer. So laptop, from the name you can depict the meaning of laptop. You can place it on your lap. Okay, so laptop is a small and lightweight computer. It is smaller in size and can be kept on our lap. It works on an inbuilt battery. इसके अंदर एक inbuilt battery होती है that need to be charged. It is a single unit, doesn't require different parts because keyboard भी इसी के अंदर क्या है, fitted है, and टच पैड आपको दिया गया है so that you will not need a mouse. Okay, although you can connect a mouse, okay, with the help of USB port which is already given in the laptop. Now tablet computer, it can be held in one hand. ओके, टैबलेट जो है आप बच्चों, आप क्या कर सकते हो, उसे वन हैंड में कैरी कर सकते हो. इट हैज अ टच स्क्रीन. इट ऑल्सो वर्क्स ऑन एन इनबिल्ट बैटरी. सो जो आपका टैबलेट है बच्चों, वो क्या कर सकते हो, आप उसे हाथ पे पकड़ सकते हो इजीली. इसमें टच स्क्रीन होती है और इसमें भी इनबिल्ट बैटरी पाई जाती है. रिमेंबर दैट बच्चों, आपका लैपटॉप हैज अ टच पैड दैट एक्ट्स लाइक अ माउस. एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि लैपटॉप में बच्चों माउस नहीं आता, उसमें आपके पास एक टच पैड होता है. उस टच पैड का यूज करके आप उसे माउस की तरह एक्ट करवा सकते हो. आई मीन वो एक्ट ही करता है माउस की तरह. एंड एक्सटर्नल माउस कैन ऑल्सो बी अटैच्ड टू द लैपटॉप इफ रिक्वायर्ड. ओके, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल एट दैट मोमेंट. सो सुपर कंप्यूटर. सो लेट्स सी what is supercomputer. It is the most powerful computer used by scientists for their research work. Okay, so supercomputers बच्चों जो होते हैं वो बड़े बड़ी कंपनीज में यूज होते हैं. एंड ये कंप्यूटर काफी पावरफुल 5G मतलब 5th जनरेशन में इंक्लूड होता है. यू विल एक्सप्लोर अबाउट द जनरेशन इन योर upcoming classes. Now let's understand the advantages of a computer. So there are some advantages of a computer. Computer are so useful in today's time, right, to us because of their unique feature. A computer has the following advantages. For example, the very first one is speed. The working speed of a computer is very fast and it can complete tasks within a second, students. And accuracy, a computer is an accurate machine because there is no chance of an error. If you are giving a right input, then it will give you a correct output. This means it doesn't make any mistake. A computer can solve difficult calculation accurately, but if wrong data is entered, as I told you, wrong input or wrong data, the computer will return the same wrong information. Okay, so you must need to give the wrong data. I mean, you must need to give the right data. Okay, so that you can't get any wrong output. समझ में आया बच्चों? आपको राइट ही डेटा देना पड़ेगा. सपोज हियर यू कैन सी यू वांट 1 + 5, then it will give you 6. But if you are asking a + 5, so it will give you an error. Okay, now here let's see, it doesn't get tired. So computer never gets tired with work. Always remember it. Human beings get tired, but computer doesn't get tired. It can work for many hours without getting tired. It only required electricity. तो बच्चों, कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए, उसे ऑन रहने के लिए. एंड कंप्यूटर काफी घंटों तक काम कर सकती है विदाउट गेटिंग टायर्ड. नाउ कंप्यूटर डज नॉट फॉरगेट एनीथिंग. एनी वर्क दैट इज सेव्ड ऑन द कंप्यूटर इज नॉट लॉस्ट. व्हाई? अ कंप्यूटर डज नॉट फॉरगेट द इंफॉर्मेशन और द डेटा दैट इज सेव्ड ऑन इट अनलेस डिलीटेड पर्पसली इन मिसहैप. सो बच्चों, चाहे मिसहैपनिंग हो जाए या पर्पसली आप उसे डिलीट कर रहे हो, जब तक डिलीट नहीं करोगे डेटा डिलीट नहीं होगा. ऑलवेज रिमेंबर इट. ओके, मल्टीटास्किंग. A computer can do multiple jobs at the same time. Suppose you are listening the music, you are typing a letter. Okay, for example, it can play while doing the sums. So like this, you can perform many jobs, multiple jobs at the same time. That is called multitasking. Now, how does a computer work? So let's see. A computer is also a machine, right? So the working of a computer generally involves 3 steps, and these are input, process and output. Here you can see. So whenever we give instructions to the computer, it is called an input. The computer works according to our instruction, so that is called processing, and the computer gives us result, that is called output. So these are the 3 phases. How does a computer work? So for example, if you want to understand this concept with a daily life example, then you can see here. For example, the juicer needs the input, that is fruits, right? अगर आपको जूस बनाना है तो आपको जूसर में फ्रूट्स को डालना पड़ेगा. that is called an input, on which it processes, that is called grinding. जो आपका फ्रूट है वो ग्राइंड होता है एंड वो आपको आउटपुट देता है, गिव्स अस द आउटपुट, दैट इज कॉल्ड जूस.
Okay, so here you can see that is input, then you will process it and you will get the output. Clear? So moving forward, take another example. If you want to add the numbers, okay, we have taken an example of our daily life. Now we are going to relate in the terms of computer. So suppose, take another example. If you want to add the numbers 1, 2 and 3, and we need to type the numbers and give the instruction to add them, that is input. The computer will add them, process and gives the result as the sum of the two numbers, output. So here you can see that is wrong bachcho, sum of the three numbers, because we are giving three numbers not two. So just correct it here. Now students, here अब समझते हैं, you have already opened your application calculator. Now calculator में आपने क्या करना है, input देना है 1, 2, 3 and plus. ओके, सो अब कंप्यूटर क्या करेगा, उसे इस तरीके से प्रोसेस करेगा and that will give you an output, that is 6. Similarly, a computer also inputs the information, processes it and gives the desired output. To give input to the computer, we use the input devices. For example, we have already learned about the input devices: mouse, keyboard, joystick, webcam, microphone and light pen. These all are examples of input devices. अगर हमें input देना है तो हमें input device का use करना पड़ेगा. And to process, the computer uses the central processing unit, that is called CPU. To show output, computer uses the output devices. Output devices में example: monitor, printer, speaker, plotter and projector. So here you can see this is your input device, then it is processing, getting processed and you are getting an output. So keyboard से आप जैसे कोई input type कर रहे हो, CPU उसे process कर रहा है and monitor is giving you an output. Okay, so now student, let's see the vocabulary. First is input, is the act of putting information into a computer. So you are putting information कहाँ पे बच्चों, अपने computer में. Process is the calculation, processing is the calculation and comparison done by the CPU on the given instruction or information. So process क्या है, वो calculation है या comparison है. सो बेसिकली आपको जो आउटपुट चाहिए, उस आउटपुट को लेने के लिए आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है. जो इंस्ट्रक्शन आपने से दिए हैं वो कंप्यूटर से परफॉर्म कर रहा है. आउटपुट इज द इंफॉर्मेशन रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर एंड आफ्टर गेटिंग प्रोसेस्ड यू आर गेटिंग अ रिजल्ट दैट इज कॉल्ड एन आउटपुट. Now let's see in a nutshell. So computer is an amazing machine. Computer क्या है बच्चों, आपका एक amazing machine है and it can do different types of work, right? So computer are, यहाँ पे अब हम एक चीज और समझेंगे. कंप्यूटर आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस which we have already covered and fields to do different tasks such as in home, school, offices, shops and shopping malls, banks, hospitals, restaurant, hotels, railway station and airports and designing and research. ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल काफी ज्यादा यूज हो रहा है. नाउ कंप्यूटर आर ऑफ डिफरेंट टाइप एंड साइजेस. फॉर एग्जांपल, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर and supercomputer are the different type of computer in different sizes. Computer are so useful to us because of their unique features, and computer works on the concept of input, process and output, that is called IPO cycle. Okay student, always remember it. To give input to the computer, we use the input devices. For example, mouse, keyboard, joystick, webcam, microphone, light pen. So these all are an example of input devices, okay, which we use to give an input to the computer. Next, to process, the computer uses the processing device, and processing devices are CPU. To show output, the computer uses the output device. Output device in bachcho monitor, printer, speaker, plotter and projector. So these all are the points from the chapter. I hope it is clear to all of you, right? So now what you have to do, you have to check your knowledge based on this knowledge, whatever I have told you, whatever I have taught you. So just revise the chapter and check your knowledge here by solving this exercise. I'm gonna meet you in the next lecture with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring, students. Bye bye, students.